Okay, so we are going to start with alcohols, bacho. And in today's class, we need to introduce some alcohols in today's class, right? Alcohol is also one of the homologous series. It is also one of the homologous series, right? And it has all such properties जो कि हमने पढ़ी थी homologous series की properties. It should have a general formula which is CnH2n plus 1 OH. This is the general formula for this family, right? CnH2n plus 1 OH. This is the general formula, and then it has same functional group. So the functional group is OH. In every compound of alcohol, you will find this functional group, and this is known as hydroxyl. This is not hydroxide. You need to keep remember this is hydroxyl. Hydroxyl means it has a covalent bond with the carbon chains, right? और you need to keep remember यहाँ पर एक बच्चे जो है ना just basic mistake करते हैं कि hydroxide इसको समझते हैं. Hydroxide alkalis में होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, वो -1 होता है. ये -1 नहीं है, ये बॉन्ड है, ठीक है. सो जर्नल प्रॉपर्टीज में आपके पास एक तो ये आ गया कि सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जर्नल फॉर्मूला. उसके बाद फिर जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो इट शोस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विद द वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और CH2 का डिफरेंस, ठीक है. तो उसके साथ साथ अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने कंपाउंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? If you talk about molecular formula of the compound having one carbon, so we just need to place one. We just need to place one in the formula. So you can see that it would be C1H, 2 ones are 2 plus 1, 3, and OH. This will be the molecular formula of first member of this family, CH3OH. Then we need to draw the structure of this, which is displayed formula. If you talk about displayed formula, so in this type of formula, you need to show every single bond. You need to show every single bond. So you know that carbon has 4 bonds, 1, 2, 3, 4. And over here, 3 bonds are with hydrogens and 1 bond is with O, and this is bonded with 1 more hydrogen. So you need to keep remember this, बच्चों, कि आपके पास आपको ये बॉन्ड दिखाना जरूरी है कि यार एक कार्बन जो है ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और वो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ठीक है ना. हमारे सिलेबस में इसका कोवेलेंट स्ट्रक्चर भी है. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई अगर इसके डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हम बनाते हैं, सो अ सिंगल कार्बन बॉन्डेड विद 3 डिफरेंट हाइड्रोजन्स, and then this is bonded with 1 oxygen, and then oxygen is bonded with hydrogen. And we know that carbon has 4 electrons, so 1, 2, 3, 4. And hydrogen has only 1 electron, so it would be like this. And over here, 1 electron of oxygen bonded with carbon and 1 electron of oxygen bonded with hydrogen, and the 4 electrons of oxygen would be outside. So you need to keep remember the dot and cross diagram of this molecule as well. This is the part of our syllabus. Then we have one more type of formula which is known as condensed formula. So in this type of formula, you can write just like this, CH3, and you can combine OH like this. Don't need to make a difference of O and H over there. You don't need to show the different bond of O and H over here. You can combine these 2 atoms together in this, right? And then we have empirical formula. If we talk about empirical formula, so in this type of you can say that family, यहाँ पर empirical formula सबका molecular formula होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कंपैरिजन नहीं बनेगा. यहाँ पर ऑक्सीजन सब में एक एक होगा, हाइड्रोजन और कार्बन आपके पास बढ़ते रहेंगे, तो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा नहीं यहाँ पर. तो आपने याद रखना है कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा यही ज्यादातर आपको एम्पेरिकल फार्मूला भी मिलेगा, ठीक है. सो ये हो गया. उसके अलावा आपके पास द नेम ऑफ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू नो हाउ कैन वी राइट द नेम्स, and for the writing of names we know that we should know prefix and suffix. So bachcho, we know that prefixes are all the time it would be same. So if we have 1 carbon, so it should be meth, and because the family is alcohol, so the name is going to be ended over OL, right? So इसको मिथॉल नहीं बोल सकते, हम इसको नाम को कंप्लीट करने के लिए A और N का यूज करते हैं, तो it would be methanol. It would be methanol. You can say that कि भाई आपके पास अल्कोहल की नेमिंग जो हमेशा एंड होगी वो एनॉल पे, तो it is methanol, ठीक है. So if we talk about second carbon, so बच्चों if we just write 2 carbons over there, so it should be C2, and it would be 2
2 ones are 2 plus 1, sorry, 2 to the 4 plus 1, 5, and then OH. So this is the second, you can say that molecular formula of the second member of this family, or you can even write this one as well, which is like that: 1 carbon, 4 hydrogen, and O. You can even write 2 carbons and 6 hydrogen and O, because we know that what is molecular formula? Molecular formula is the formula in which you are going to show the exact number of each element, right? तो ये आपके पास इस तरह भी लिखा जा सकता है, right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so ये हो गया आपके पास सेकंड मेंबर, और इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम आपके पास हो जाएगा, it would be ethanol. It would be ethanol. So it is ethanol, the second member of this family. And if you want to draw the structure of this, so the displayed formula will be 2 carbons joined by a single bond. Then we are going to complete the valency of each and every carbon, 4 bonds over there, and 1 should be O and H over there. So this will be any bond should be like O and H bond. जरूरी नहीं है कि मैं लास्ट में ही लगाऊं, मैं पहले भी लगा सकता हूं, मैं नीचे भी लगा सकता हूं, मैं ऊपर भी लगा सकता हूं, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। और इसका जो कंडेंस फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? CH3 देन CH2OH। जो पहला वाला कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा वाला जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन और 1 OH के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब मैं 3 कार्बन वाला आपको बना के दिखाता हूं। इफ यू टॉक अबाउट 3 कार्बन्स बच्चों, so it would be what? It would be propanol, right? And the molecular formula will be C3H7OH, and even you can combine the hydrogens over there, it would be C3H8O, and the molecular formula would be like this. This is propanol, right? And you need to know this, but if you talk about functional group, so the functional group can be changed its place, right? And if the functional group is changing its place, it means कि वो भी आपके पास isomer कहलाता है. For suppose if I am just writing like this, I am placing OH in second carbon on the second carbon, so it would be like this. So they are isomers of each other. You can see this. They both have the same molecular formula, but they have different structural formula, right? So it would be what? CH3, CH2, CH2OH, but this is what? This is CH3, CHOH, then CH3, right? And the name is also different. It is propane 1-ol, and this is propane 2-ol. You can say that these are isomers of each other due to the position of functional group. If you are changing the position of functional group, it can be considered as an isomer. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Yes, now it's your turn. It's your turn. What you need to do, but so you need to make all these type of formula for butanol and pentanol, and also you need to form positional isomers over here as well. You need to change the positions and you need to make isomers. If you can do this, just try this and then send me the picture so I can check you are doing it right or not. So you can see this, bacho, this is actually the startup of alcohol. So you can see this, the 4 physical properties of homologous series. You can say that same journal formula, right? Then same functional group. And then you can see this, there is a variation in physical properties and similar chemical properties due to the presence of the same functional group, right? और उसके अलावा जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो देखें आप यहाँ पर, वो भी फॉलो हो रही है, and that was you can say that the difference of CH2, between 2 consecutive members. So if you talk about these two, you can see this, there is a difference of 1 C and 2 H's. If you talk about these two, there's a difference of 1 C and 2 H's. So you can see this all the time, there is a difference of 1 carbon and 2 hydrogen between 2 consecutive members. तो ये भी एक physical property है homologous series की, जो कि यहाँ पर follow हो रही है. Is that right, every one of you? Yes, sir. Okay, so now we can move on towards the next thing. So, bacho, first of all, we need to know about the formation of alcohol, right? We need to know about the formation of alcohol. So how can we form alcohol? Formation of alcohol.
If you talk about the formation of alcohol, bacho, so here we have two methods. One we already done in alkenes, right? One was like we can produce alcohol by the catalytic addition of steam into the alkenes. If you remember, one was catalytic hydration. Catalytic hydration of alkene. If you have alkenes, so you can add water over there, it would produce alcohols. We already talked about this in the last chapter, alkenes, right? So for suppose if you have two carbons, it means if you have C2H4, if you have alkene, so you can add water over there, or if you can react with water in the presence of concentrated phosphoric acid, or along with 350 degrees Celsius temperature and 8200 atmospheric pressure. If you do this in these conditions, so definitely the double bond of the carbon breaks, and on one carbon it would be hydrogen, and on the other carbon would be hydroxyl to attach, and it will form what? Alcohol. It would be CH3 CH2OH. So you can call this as ethene को convert कर आपने बना दिया ethanol. Ethene को convert कर आपने बना दिया ethanol, right? So you can form ethanol from ethene. Then same as it is, one more thing that you can do over here. For suppose if you have if you have three carbons, so you can even produce propanol over here. आप यहाँ पर propanol भी बना सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपके पास 3 carbons हो, so you can even produce propanol over here. So let's see कि आप propanol कैसे बना सकते हैं. Let me, yes, here it is. So बच्चों, if you have 3 carbons, so it's propene C3H6. If you are reacting it with water, so it will produce what? Propanol. Means जहां जिन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और एक पर H और एक पर OH लग जाएगा, तो ये प्रोपेन 1 ol भी बन सकता है, प्रोपेन 2 ol भी बन सकता है. But right now we don't need to show this. It would be propanol. That's fine, right? So you can even convert propene to propanol. You can form any type of alcohol. You can form any type of alcohol by this method. You can even produce ethanol, you can even produce butanol, you can even produce pentanol, any type of ethanol with any number of carbon you can produce. बस आपने याद रखना है, जो भी अल्कोहल आप बनाना चाहते हैं उतने कार्बन वाला आप एल्कीन यूज कर सकते हैं, राइट बच्चों? Yes, sir. And the second method is something different. The second method is actually fermentation. Second method जो है आपके पास बच्चों वो क्या है? Fermentation. उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें आप किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं बना सकते, उसमें सिर्फ एक ही तरह का अल्कोहल बनेगा और वो है इथेनॉल. That's final. वही बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता. So if you talk about the second method, which is fermentation, so इस fermentation में आपके पास हमेशा एक ही तरह का अल्कोहल बनेगा और वो हमेशा क्या होगा? आपके पास इथेनॉल होगा, 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा. So for this you should have glucose. आपके पास ग्लूकोज होना चाहिए. अभी ग्लूकोज के लिए आप कोई सा भी सॉर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि ये आपके पास कोई सा भी फ्रूट हो सकता है, कोई भी आपके पास कोई भी सोर्स हो सकता है, किसी भी सोर्स से आप ग्लूकोज लेके आ सकते हैं. जब आप उस ग्लूकोज को क्या करते हैं बच्चों, उस ग्लूकोज को आप फर्मेंट करते हो, इसके लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ईस्ट. दिस इज बायोकैटालिस्ट. यू शुड हैव दिस. आपके पास ईस्ट होना चाहिए और ये एंजाइम भी कहलाता है, ठीक है ना? आपके पास ये होना चाहिए, और क्योंकि ये एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स बायो वाले बच्चों को पता होगा कि हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं. तो दैट इज व्हाई यू नीड टू कीप द टेम्परेचर बिलो 37 से नीचे रखना है. अब आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा. इट शुड बी 25, इट शुड बी 30, तो कुछ भी हो सकता है. आई जस्ट रिकमेंड यू टू कीप दिस बिटवीन 25 to 30, राइट? तो आप ईस्ट ले सकते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं? 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको कर सकते हैं आप प्रोसेस को. तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास अल्कोहल बनता है जो कि हमेशा इथेनॉल होगा. ऑल द टाइम इट शुड बी इथेनॉल along with the carbon dioxide. It will release carbon dioxide as well. ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने जो इसमें याद रखना है वो ये है कि this is actually an aerobic process. This is actually an aerobic process, and this is the main thing of this process. You need to do this in a closed system. You need to do this in a closed system in absence of oxygen. In absence of
oxygen, because the problem is with the alcohol. Alcohol is one of the substance that can be oxidized. ये oxidize हो सकता है, and it can form carboxylic acid. So that is why we need to keep it in closed system. So the oxygen cannot go inside the chemical process, and the alcohol cannot be oxidized to form carboxylic acid, because we are producing alcohol. We are not producing carboxylic acid. तो हमें बचा के रखना है अल्कोहल को कि भाई वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. So these are the two processes that you need to keep remember for the formation of alcohol. ये दो process आपके पास हो सकते हैं, एग्जाम में वो आपसे description भी मांग सकता है इसकी. So be aware about this. ये बहुत ही important हो सकते हैं. इन दोनों में difference आपके सामने है कि एक में आपके पास सिर्फ एथेनॉल बन सकती है और एक में आप किसी भी तरह का अल्कोहल बना सकते हो. This is the first difference. ठीक है ना. आप इसको फायदा भी कह सकते हैं कि आपके पास पहले वाले प्रोसेस का ये फायदा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पहले वाले प्रोसेस में आप जो दिल चाहे बना सकते हैं. दूसरे वाले का ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल बना सकते हैं. ठीक है. ये दूसरे वाले का नुकसान भी हो सकता है. एक तरह का आप कह सकते हैं यार ये नुकसान है, मतलब इसके अलावा तो कोई अल्कोहल बनने नहीं इससे. ठीक है ना. तो अगर आपको कोई और अल्कोहल बनानी है तो आप ऊपर वाला मेथड यूज करेंगे. ऊपर वाले का एक फायदा ये हो सकता है आपके पास कि ऊपर वाला जो है आपके पास, उसके अंदर आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे इट वुड बी प्योर. जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे वो कैसी होगी, प्योर होगी. यू कैन सी दिस कि दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जो कि आपके पास बन रही है. इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, व्हाटएवर जो भी बन रही है वो आपके पास एक ही बन रही है. तो इट इज एडिशन रिएक्शन, वो प्योर होगी. ठीक है. सेकंड वाले का प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये जो प्रोसेस है इसमें आपके पास ये मिक्सचर बनता है. अगर आप इससे अल्कोहल निकालना चाहते हैं तो फिर आपको दोबारा से क्या करना पड़ती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ती है. तो यू कैन से दैट कि ये आपके पास इम्प्योर फॉर्म में आपको मिलेगी. So if you want to have ethanol from this, so you need to do fractional distillation of this. आपको क्या करना पड़ेगी, fractional distillation करना पड़ेगी. Fractional distillation to get the pure ethanol. By fractional distillation you can get pure ethanol from mixture of these all. ठीक है ना. आप जितने दिन तक उसमें ईस्ट रहेगा, जितने दिन तक वो ग्लूकोज उसमें रहेगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता रहेगा. ये कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा कंप्लीटली कन्वर्ट होने में. तो इस वजह से ये मिक्सचर होगा. तो अभी जो मिक्सचर है भाई, अब उस मिक्सचर को अगर आपने प्योर करना है, उसमें से एथेनॉल निकालनी है, यू नीड टू यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एंड वी नो दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. सो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिफरेंट सब्सटेंसेस आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे. तो इथेनॉल आपके पास जो कलेक्ट होगा वो उसके बॉइलिंग पॉइंट जो कि उसका 78 होता है उस पे वो आपके पास रिसीव हो जाएगा. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Any problem to any one of you? All clear? Yes, sir. ठीक है. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. So the new thing that we need to talk about of alcohol is actually chemical properties of alcohol. Chemical properties of alcohol. अच्छा देखें बच्चों, एक और बात जो मैं आपको इससे डिफरेंस में बताना भूल गया. अगर आप देखते हैं इन दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस, तो आपके पास जो C2H4 है, C2H4 आपके पास एक्चुअली इथीन है जो कि आप क्रूड ऑयल से जो है हासिल करते हो. ठीक है ना. क्रूड ऑयल से आप इसको हासिल करते हो. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि क्रूड ऑयल से तो आप इसको हासिल कर सकते हो. मसला ये है कि क्रूड ऑयल कहाँ से आता है. क्रूड ऑयल आपके पास जमीन से आता है. इट्स मिनरल. ठीक है ना. तो अगर इतना ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं, डिफरेंट अपने सोर्सेज यूज कर रहे हैं, इतना यूज कर रहे हैं हम क्रूड ऑयल को, तो वो एक वक्त आएगा वो खत्म हो सकता है. दिस इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स. वो खत्म हो सकता है. ठीक है. तो ऊपर वाले का नुकसान ये है कि जो आप बना रहे हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स से बना रहे हैं. नीचे वाला ग्लूकोज जो है आपके पास, आप जो है शुगर केन से ला सकते हो. ग्लूकोज आपके पास माइस से ला सकते हो. ग्लूकोज आप फ्रूट से ला सकते हो. इट कैन बी जनरेट. you can do some plantation for this. You can generate this. So this is actually a renewable source. तो ये इसका एक फायदा भी है नीचे वाले का. ये नीचे वाले से इथेनॉल आप बना सकते हो जब दिल चाहे, क्योंकि this are renewable source. Right बच्चों? This is also one of the, you can say that advantage of the one which is downward. So केमिकल प्रॉपर्टीज. अच्छा भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास अल्कोहल की जो है प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. आपके पास पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास अल्कोहल की हो सकती है वो क्या है आपके पास, कंबस्शन. You need to keep remember until and unless आपके पास जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हों, जब तक उन कंपाउंड्स में आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन आता रहेगा तो वो जल सकते होंगे. ठीक है. अब देखें
जब आपके पास अल्कोहल जल सकता है, so you can say that it can be used as an alternate fuel. So इसका एक यूज भी हो गया, ये एक तरह का यूज हो गया आपके पास अल्कोहल का। और क्या यूज है? इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल, ठीक है ना, ये फ्यूल के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। So let's talk about their combustion. There is a little bit problem in the balancing, so you need to just look at over there कि इसको balance कैसे करना है। तो अगर आप बात करते हो अल्कोहल की, for suppose I have CH3OH, same thing, we know that if we are going to burn this, we must need to use oxygen. Combustion में हमेशा ऑक्सीजन यूज करनी होगी, ऑक्सीजन के बगैर आप किसी चीज को कंबस्ट नहीं कर सकते हो। We are going to use oxygen over here, and I told you over there once we are writing you were writing combustion equation, I told you over there कि बेटे आप लोगों ने ये देखना है कि रिएक्टेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। अब आपने कंपाउंड देखा, कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं ये आपने देखने हैं। जब आपने देख लिया कि भाई यहाँ पर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो इन्हीं के कंपाउंड्स बन सकते हैं बस फाइनली, और उसके अलावा नहीं बन सकते। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अपना तो कंपाउंड बनाएगा नहीं, तो कार्बन बना सकता है और हाइड्रोजन बना सकता है। तो कार्बन का पॉसिबल कंपाउंड जो ऑक्सीजन के साथ है, स्टेबल वन विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन का स्टेबल कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ है वाटर। तो ये भी जब जलेगा, अल्कोहल भी जब बर्न होंगे, तब भी आपके पास क्या बनेगा बच्चों? आपके पास ये ही कंपाउंड्स बनेंगे विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड यू आल्सो नीड टू नो दिस कि अगर इसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो भी इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही generate होगा। So the same equation would be followed in alcohol as well, as you were talking about in alkanes and alkenes. Right, the only difference is the balancing. Again, I told you you need to balance carbon first, then hydrogen, and then oxygen. So the same pattern would be followed in this as well. पहले आपने carbon को balance करना, just look at over here, the carbon is already balanced. And over here you can write 2. Right, बच्चों? Then आपने balance करना है hydrogen. So you can see this. Here we have 4 hydrogens and over here we have 2. So we can balance hydrogen. Here we have 6 hydrogen and over here we have 2. So we can balance hydrogen. तो भाई पहले कार्बन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और लास्ट में आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का डिफरेंस यहाँ पर हमें कैसे क्लियर करना है ये देखना है बस आपने। देखें, this is 2 oxygen over here and 2 oxygen over here. Total we have 4 oxygen on the right hand side. अब यहाँ पर आपने 4 जब बैलेंस करोगे ना, यहाँ 2 मत लिख देना भाई बैलेंस करने के लिए। आंखें खोल के हमें यहाँ देखना होगा कि यहाँ एक ऑक्सीजन हमारे पास अल्कोहल में भी मौजूद है, तो ये माइनस करके बाकी आपने ऑक्सीजन में बैलेंस करने होगा। तो टोटल वी हैव 4 ऑक्सीजन्स, ठीक है ना। 4 में से आपने ये अल्कोहल वाला माइनस किया तो बच्चे कितने? 3। तो अब इन 3 को बैलेंस करने के लिए 3/2 वी कैन राइट ओवर हियर, सेम एज इट इज 2 2s are 4 plus 3 1s are 3. तो टोटल वी हैव 7 ऑक्सीजन ओवर हियर। एक ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी आ गया है, उसको हम माइनस कर देंगे, बचे कितनी? 6 ऑक्सीजन विच इज टू बी बैलेंस्ड। अब यहाँ लिखोगे 3 2s are 6 हो जाएगा। Is that right, बच्चों? Sir, can you please Yes, sir. explain again? Yes. Just look at over here. For suppose if we have propanol, C3H7OH, ठीक है ना? If you are burning this in oxygen, so definitely it will produce carbon dioxide and water. The products, right? There are 3 carbons, so you can write 3 over here. There are 8 hydrogens, you can write 4 over here. This is the same one जो कि हमने alkane और alkene में भी किया था. The difference of oxygen only. This is 3 2s are 6 and this is 4 1s are 4. So total we have 10 oxygens on the right hand side. अब हमें बैलेंस करना है, तो देखो एक ऑक्सीजन तो ये आ गया, बचे कितने? 9। उन 9 को हमें बैलेंस करना है, तो इट वुड बी 9/2। तो ये हो गया 9 + 1 10। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Okay, now it's your turn to write the equation for butanol, pentanol, and hexanol. And before going to write these equations, I just want to confirm few things from you guys. Yes, Bacho, can you please tell me what is the source for carbon dioxide? Bacho, what is the source for carbon dioxide? How can carbon dioxide be in the atmosphere? जल्दी से बताना है हमें। Respiration. Through respiration. Respiration, combustion, and now you can even see this in this process, fermentation. Fermentation में भी carbon dioxide produce होती है हमारे environment में। This is one of the source कि आपके पास आ सकती है carbon dioxide respiration से, combustion से, ठीक है ना। And how can we remove carbon dioxide from the atmosphere? We know that for this we need to do plantation. And what are the tests for carbon dioxide? One is lime water turns milky, and the second is the red litmus paper or the blue litmus paper
turns red because it is acidic in nature. And the problem, we know that it's a greenhouse gas, it causes global warming. And also carbon monoxide can also be produced over here if you are doing this process in limited oxygen. So incomplete combustion can also cause carbon monoxide to produce. And the problem with that is actually this toxic gas. It can even kill you on the spot. And the nature of the carbon monoxide is neutral. All right. So these are all things that we talk about in the combustion of alkane and alkene as well. So over here, we again review this because these are the few questions, small questions, to the point questions they can ask an exam and give you mark for that. ठीक है. तो इससे पहले आप जो है इक्वेशंस लिखें जल्दी से और फिर मुझे सेंड करें. ठीक है. मैं चेक करता हूं कि आपको ये बैलेंसिंग समझ में आई या नहीं. Just do it quick and send me the